Good morning, children. Today we will study fill in the blanks, short question answers, long question answers, tick the correct answer, and differences of chapter 1. Chapter 1 An introduction to resources. Fill in the blanks, you can go through yourself. Question answers. Define ubiquitous and localized resources. Ubiquitous resources are found everywhere, for example, air, wind, sunlight. Localized sources are found at certain places, for example, gold, silver, coal, iron. यूबिक्विट कुछ सोर्सेज जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, और लोकलाइज सोर्सेज जो होते हैं वो कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर जैसे हो गया। अब बायोटिक रिसोर्स एंड गिव एग्जांपल। ये जो आंसर है ये गलत आंसर है, इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। बायोटिक रिसोर्स are derived from living organism. They include plants such as cereal crop, fruit and vegetable. बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे प्लांट से मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, क्रॉप से मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर ये बायोटिक resource? For give example, abiotic resources are those resources that are found from physical or non-living environment, for example land, air, water and mineral. abiotic source वो होते हैं जो वो हम लोग को मिलते हैं फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, जैसे लैंड हो गया, एयर हो गया, मिनरल हो गया। Fourth question, what does sustainable development means? Sustainable development means to use natural resource wisely for today's need and also to conserve them for future जनरेशन। अब किसी चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करना और उसको बचा के अपने आगे के जनरेशन के लिए रखना, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डू द ह्यूमन बीइंग यूज द नेचुरल रिसोर्सेज? आंसर, ह्यूमन बीइंग यूज नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू देयर knowledge and skill. They discover, exploit, develop and convert the available or potential resource into useful products. For example, for the country to progress, human resource need to be developed. इसमें बोल रहा ह्यूमन रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स को कैसे कन्वर्ट करता है, वो उसको डिस्कवर करता है, किस तरह से उसको यूज़ में लाया जाए, किस तरह उसका ढांचा बनाया जाए, कन्वर्ट किया जाए, जिससे वो अच्छी तरीके से यूज़ में आया जाए। इस तरह हम लोग ह्यूमन लोग उसको कन्वर्ट करके अच्छे से यूज़ करते हैं। इसलिए किसी भी कंट्री को चाहिए, अगर वो तरक्की करना है तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें। Second question, human beings are the most valuable source of world. Explain. Without knowledge and technical skill which are provided by human being, no country can progress or develop. Hence, human beings are the most valuable source of world in
and in addition to discover, exploit, development, and convert the available or potential resource into useful product. They also use newer method to conserve the available resource and maintain minimum wastage. अब इसमें बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूबल रिसोर्स कैसे है वर्ल्ड का, क्योंकि वो उसके पास टेक्निकल और नॉलेज है। वो नॉलेज और टेक्निक्स के द्वारा किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से चेंज करके यूज़फुल तरीके में बदल सकता है। इसलिए वर्ल्ड का जो वैल्यूबल सोर्स है ह्यूमन रिसोर्स है, वो इसको डिस्कवर कर सकता है, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है, डेवलप कर सकता है और पोटेंशियल यूज़ में उसको कन्वर्ट कर सकता है। साथ साथ वो ये सब करने के साथ साथ वो उसको कंजर्व करने की भी कोशिश करता है और चाहता है कि मिनिमम वेस्टेज भी हो, कम से कम उसकी बर्बादी हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय conservation of resource, why it is essential for us? Conservation of resource means using resource carefully and give them time to get renewed. It is essential for us because the quality of air, water and land has distorted due to misuse and overuse of resource. Many species, plant, bird, animals have either been extinct or are on verge of extinction. Conservation of resource is very necessary for maintaining and preserving life support system for future generation. अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग को जो कंजर्वेशन है ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर लिया है और उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो इसके कारण बहुत सारे एनिमल, प्लांट सब डेड हो गए हैं या मरने की कगार पे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ करें, कम वेस्ट करें उसको और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। फोर्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द fly and explain the resource on the basis of origin. The resource based on origin are classified as biotic and abiotic. Biotic resources are derived from living organism, for example plant, animal, whereas abiotic resources are found from physical or non-living environment, for example soil, rock and minerals. Most of the biotic resources have the capacity to reproduce if the environment conditions are favorable. On the other hand, abiotic resources can be exhausted by excessive use because they are available in limited quantity in nature. Their total reserve cannot be increased by the human effort. अब इसमें बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन करना है ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो जो रिसोर्स है ओरिजिन के हिसाब से दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो होते हैं लिविंग बींग्स से होते हैं, एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो
फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे रॉक, सॉइल। उनकी जब तक यूज़ हो सकती, जितनी कैपेसिटी है उनकी यूज़ करने की, तब तक कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वो नहीं बन सकते। इसलिए हम लोग को एफर्ट करना चाहिए कि जो रिज़र्व है उसको सही तरीके से यूज़ करें। Take the following questions you can do yourself now. The differences between the following: natural source and human-made resource. Natural resource provide raw material which have to be pro- proce- proce- progressed. Water, soil, and minerals are example of natural resources. Human-made resources are created by human being from nature, from material available in the environment. Machine, tools, building technology are example of human made resource। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स होता है जो मिनरल हम लोग रॉ मटेरियल के तौर से ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। वाटर जैसे हो गया, सॉइल हो गया, ये सब एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स वो होता है जो ह्यूमन बनाता है, खुद से बनाता है, जैसे मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, ये सब। सेकेंड, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल, these are developed resources whose quantity and quality are known and are being used by human beings. Development of resources are dependent on the need, technology, and economic usefulness. Potential resource, these are the resources whose total available quantity is not known at present. They need detailed survey to estimate. एक्चुअल रिसोर्स वो होता है जो क्वालिटी और क्वांटिटी जिसकी पता है कि ये हम लोग इसको इतना ही यूज़ कर सकते हैं, इसका इतना ही डेवलपमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी इसके बेस पे इतनी ही चल सकती है, इतना ही यूज़फुल हो सकता है ये। पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जिसकी अभी तक नापी नहीं गई है कि उसकी पोटेंशियल कितनी है, उसकी यूज़फुल कितना यूज़फुल वो हो सकता है। इसलिए अभी तक एस्टिमेट नहीं किया जा सकता पोटेंशियल रिसोर्स को। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। Renewable resource, these resources have the capacity to reproduce, renew, regenerate within a short span of time. Air, water, soil, energy, wind, plant are example of renewable resources. Non-renewable resources, these resources are available only in fixed amount. They do not give replenishment by the natural process. Soil, coal, natural gas, petroleum, minerals, and are the example of non-renewable resource. रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो रिसोर्स फिर से बनाए जा सकते हैं या फिर से नए हो जाएंगे, इसको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम लगेगा, वो फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, जैसे एयर, वाटर, soil, wind,
ये सब एग्जाम्पल हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा उसमें प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसलिए रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। थैंक यू, होप यू लाइक दिस चैप्टर। Here we end all question answers of this chapter.